सारी सिविल पॉलिटिकल राइट्स, नैतिक राजनीतिक अधिकार हम में से बहुत सारे विकलांग व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. There are laws which place restrictions on people with disabilities to exercise their civil political rights because of this issue of legal capacity. और बहुत सारी विकलांगताएं हैं जिनको तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है that persons with unsoundness of mind have no legal capacity. They cannot participate in the political process. They cannot adopt children. They cannot enter into contracts. For other disability groups, also this issue, though there are no laws which prevent legal capacity of, say, the deaf or the blind, in actuality, when you go to exercise that right, which it doesn't happen. So, if a blind person, there is no laws which says that a blind person cannot go and open a bank account. But in reality, when the blind person goes to open a bank account, he faces all sorts of hurdles. So there are hurdles when you want to exercise your legal capacity. Now, this was elaborated in huge detail in the new bill. And personally, I feel कि जो भी नया कानून बनेगा, उसको civil political rights को address करना पड़ेगा. हालांकि जो हमारा जो संविधान है वो हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, वो वेरी क्लियरली देता है. फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स यू नीड अ लिटिल मोर. तो संविधान तो हमको हमारे ये फंडामेंटल राइट्स देता ही है, लेकिन जो नया कानून बनेगा उसको हम ये फंडामेंटल राइट्स को कैसे हासिल करेंगे उसमें इलैबोरेट करना पड़ेगा. उदाहरण के तौर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज बीन गारंटीड टू अस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान इज वेरी क्लियर ऑन दैट. पर व्हेन इट कम्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या मीन्स है, क्या मोड है, क्या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको भी हमको गौर करना पड़ेगा. कि if it's blind people, it has to be Braille. If it is hearing impaired people, it has to be sign language interpretation. For other disabilities, maybe alternative and augmentative forms of communication. तो ये सब गौर करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि जो हमको जो फीडबैक मिला है उसमें जो नया कानून जो सरकार ड्राफ्ट कर रही है उसमें उन्होंने सारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स को ड्रॉप कर दिया है. एंड नॉट ओनली दैट, जो हमने विमेन विद डिसेबिलिटीज एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को फोकस किया था आरपीडी बिल में, वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है. सो इसमें हमको सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज civil political rights have been guaranteed to us in the CRPD. Coming back to Asha ji's question on that issue of torture, we have not defined ill treatment and torture, certainly that I can recollect. But I would assume कि जो UN की definition है of torture would prevail in the RPD bill vis-a-vis when you look at it, that the harmonization is to be done with the CRPD. Duties and responsibilities, awareness raising or human resource development. Awareness raising की responsibility CRPD places on the state, on civil society and also on individuals. And there's a lot of focus on awareness creation of the convention, of the disability laws, of the fact that disabled persons have been achievers, can contribute to the economic process, have been an integral part of social of the community. तो awareness raising पे बहुत ज़्यादा focus है CRPD पे, जो PWD Act में नहीं रहा है. और वहाँ पे PWD Act में awareness raising केवल prevention and early detection पर ही है, सीमित है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन इन इंडिया. इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में द CRPD says that there should be national implementation पे बोला गया that there has to be the establishment of focal points to implement the convention. And that there has to be consideration for setting up coordination mechanisms, maintain, strengthen and designate authorities, and establishment of a framework
to promote, protect rights of persons with disabilities and implementation of the convention. Now, as of now, under the PWD Act, we have the state coordination committees and we have the central coordination committee. We also have the state executive committees and the state coordination central executive committee, which has representation from some persons with disabilities and organizations representing persons with disabilities. तो एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमारी सरकार में है. हाउ इफेक्टिव वो है वो क्वेश्चनेबल है, पर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है. फोकल पॉइंट नहीं है जो इम्प्लीमेंट करेगा इस कन्वेंशन को. सो द गवर्नमेंट विल हैव टू लुक एट फोकल पॉइंट टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन इन द कंट्री. एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव टू बी इन्वॉल्व कि जो भी फोकल पॉइंट बनेगा, जो भी मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन की बॉडीज बनेगी हमारे सरकार में नए कानून के तहत में, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो सजेशन गया था बिल में जो गया है उसमें वाज टू सेट अप a national disability rights authority. Subsequently, जब states में consultations हुए थे draft bill पे, तो there was a huge demand from the state that there should be state disability rights authority. So a suggestion was made that there should be a national disability rights authority, state disability rights authorities, and for the grievance redressal, उसके लिए tribunals का suggestion गया था that there should be district level tribunals which will be basically mobile courts, जो एक डिसेबल्ड व्यक्ति के घर के पास जाके उसको जस्टिस दिलवा सके. एंड स्टेट लेवल ट्राइब्यूनल्स एंड नेशनल ट्राइब्यूनल. यहाँ पे भी जो हमको फीडबैक मिला है कि दिस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि हम कमीशन बनाएंगे, डिसेबिलिटी कमीशन. So HRLN's experience with commissions has not been very good because हम लोग देखते हैं that they are not very effective in terms of enforcement of orders. All the commissions, the human rights commissions, the women's commission, कितना effective ये disability commission होगा, इस पे भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा. Offences and penalties में PWD Act is completely silent except section 69, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई fraudulently कुछ गलत तरीके से कोई benefit जो disabled person के लिए है उसको हासिल करता है तो 25,000 रुपया का फाइन और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या बोथ है. CRPD ने इस पे काफी अमल किया है. एंड आर्टिकल 5 और आर्टिकल 2 जो है CRPD का डेफिनेशन का, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है. आई एम जस्ट आस्किंग टू रीड इट आउट. Article 2 says discrimination on the basis of disability means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation. So this is an important definition of discrimination as per the CRPD. It has been defined not only as to what non-discrimination is, but also as to discrimination in what spheres. So it covers all the spheres of civil, political, economic, social, cultural areas of life. And denial of reasonable accommodation too has been very clearly mentioned as discrimination. Next, Article 5 of the CRPD on equality and non-discrimination. May again I will ask Seema to read because it's important. Article 5 says state parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds. In order to promote equality and eliminate discrimination, state parties shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided. So Article 2 has defined discrimination. Article 5 has clearly said that the state will provide legal remedies if there is discrimination. Now, just this fact alone implies that any new law which comes in the country will have to have very strong legal provisions.
for non-discrimination. It has to be a law which will be an anti-discrimination law, which Rajan Mani was speaking about yesterday. We need a strong anti-discrimination law with penal provisions. Thank you. विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव हो सकता है, उसको आप लंगड़ा बोल सकते हैं, लूला बोल सकते हैं, लेकिन उस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करता है। ऐसा हमारे देश में दलित्स की उनके लिए एक कानून बना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल। अगर आप दलित को एक डेरिगेटरी टर्म से बुलाएंगे तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन एक विकलांग व्यक्ति को आप डेरिगेटरी टर्म से बुला सकते हैं, आपको पनिशमेंट नहीं होगी। इसमें अब एक बदलाव आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या होता है उसको सीआरपीडी ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, और ये भेदभाव को सारे अधिकारों के लेवल पे लेके गए हैं, जो आपके नैतिक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, पूरे अधिकारों के क्षेत्र में इसको लेके गया है। और रीजनेबल अकोमोडेशन का डिनायल अगर होता है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन सीआरपीडी ने माना है। और आर्टिकल 5 जो है कन्वेंशन का, वो कहता है कि आपकी सरकार इंश्योर करेगी कि किसी विकलांग व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, और अगर भेदभाव होगा तो उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म आप प्रोवाइड करेंगे कि उसको लीगल रिड्रेसल मिल सके, मतलब उसको लीगल सपोर्ट मिलेगा उस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए। तो इसको अगर हम इम्प्लाई करेंगे तो जो नया कानून बनेगा उसमें पेनल्टीज, पेनल प्रोविजंस का आना बहुत जरूरी होगा, कि अगर किसी विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका रीजनेबल अकोमोडेशन का डिनायल होता है, वो अब एक पेनल ऑफेंस होगा। ओके, थैंक्स। करता है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये अपने आप में पहली चीज है कि जब हम एक लॉ की कवरेज की बात करते हैं तो एकदम नेशनल ट्रस्ट एक्ट को देखते ही ये एहसास हो जाता है कि वो उसका कवरेज बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम डिसेबिलिटीज के लिए वो इस वक्त काम कर रहा है। जबकि हमें जो नेशनल ट्रस्ट जैसा जो एक्ट है वो एक हाई सपोर्ट नीड के लिए होना चाहिए, और हाई सपोर्ट नीड के लोग हर विकलांगता में होते हैं। तो इसलिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट को सब विकलांग लोगों के लिए काम करना चाहिए, उसका फोकस हाई सपोर्ट नीड होना चाहिए। सॉरी रत्ना, यू हैड गॉन समवेयर सो आई स्टार्टेड एंड सोशल मॉडल और एक राइट बेस्ड अप्रोच के बेसिस से सारे लॉज को अमेंड करना पड़ेगा और नए तरीके से बनाना पड़ेगा। और एनजीओस को भी और गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि विकलांग लोग अपने आप से अपना जीवन पूरी तरह से जी सकें, सोसाइटी में रह